Today we are going to start our major portion on digestion and the absorption, right? And this topic you people have already studied in your 10th class in the life process. So guys, the topic name is digestion and the absorption, right? So can we say that food is the basic requirement for all the living organism? So of course, the energy required to run the life, so it is coming from the food, right? All the energy usually come from the food that we eat, like it can be of like carbohydrate or protein or vitamins or minerals, right, or fat you can say. So if I ask you what do you mean by the digestion, if I start from the basics, as the topic name is digestion and the absorption, so what do you mean by the digestion? So can we say that it is the simple process of conversion of the complex food substances into the simple and the absorbable form, right? Because our body can't absorb the complicated food. We have millions billions of the cells, so they want simple food. They want like a very tiny particles, and the food which we are taking, so it is complicated food. That's why we have to break them, so it can be broken by our digestive system only. So that's why we can say it is the process of conversion of complex food substances into simple and absorbable form. And you know that our mouth is also called, can we say that our mouth is also called the buccal cavity, right? So if we have our mouth, right, it's just the rough diagram, don't laugh on it. Yes, so this is our mouth, right? So we can call it as buccal cavity. So inside the buccal cavity, of course, we have the teeth which are involved in the mechanical processes like crushing, grinding, chewing, and we have the tongue which help in the mixing of the food, right? And we also have the salivary glands. Am I right? Sublingual, submandibular, and parotid glands which releases saliva, and it also contains some enzymes. You remember everybody? Okay. So this is about the digestion. And now chapter name is actually digestion and the absorption. So if I ask you what do you mean by the absorption? So when the food is already digested, right? So after that nutrients are absorbed in the bloodstream, and it is to be transported to the various part of the body, because every cell need energy, every cell need food. So that's why the nutrients are mainly absorbed in the small intestine, where the absorption of the water and the all the particles are taking place usually. So that's why we can say absorption means, so when the food is digested in the small intestine, so after the small intestine, all the nutrients are absorbed in the villi. Okay, and then with the help of blood, all the food particles reaches to all parts of our body. Am I right? So nutrients are absorbed by the bloodstream so that they can reach to all parts of our body. Are you getting everybody into the bloodstream? And you know very well, small intestine has three parts: duodenum, jejunum, ileum. So of course absorption will take place after the ileum, right, the last part of the small intestine, because in the above part food is being digested, right? That's why. So let's start with the chapter. So first thing, if I ask you how many components are there in our food, how many components? So can we say there are basically five components?
right? And major are basically three. So we have the like if we have the food, so the component is firstly carbs. Do you know gym going guys usually take the carbs, and of course also the protein. So carbohydrates they are taking, fats they are taking, right? Carbohydrate, fats, and proteins. These three are the major one. Okay. And of course, very small quantities of what? Vitamins and the minerals. Minute quantities you can say. So we also take small quantities of the vitamins and the minerals. So food is what? So involves the carbohydrate, proteins, fat, and vitamins and the minerals. So carbohydrate are the primary source of the chemical energy in our body, right? So carbohydrate is primary source. Protein means what? So it is the main structure component of our body. So it help in the body building, right? That's why all the gym going guys takes the protein powder. Have you seen that? Protein powder like protein X and all, right? And there is a like they are not so cheap. They are quite costly, right? So protein powder they are taking. So why? Because it help in the bodybuilding. That's why. Okay. And if I talk about the fats, so fat is usually used for the like long term energy storage. Okay. So it is accumulated in our body. Of course, too much fat is not good for our body. And vitamins, minerals, what is the need for these? So can we say they help in the maintenance of our growth and the health? So these are the regulatory constituent of our body. So to maintain, these are essential for the growth, right? So vitamins and the minerals are helpful for our growth and the development. So vitamins, minerals are required for, you can say, optimum growth. So this is very important part of the vitamins. Like vitamins are basically two types. First is the fat soluble and other is the water soluble, right? And it is also asked in the examination. So we can say first is fat soluble. So fat soluble vitamins are A, D, E, K, right? So we can say vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So these are known as ADEK. And second is the water soluble vitamin, right? The water soluble vitamins means like except all these four, we can say all are water soluble vitamins like vitamin B, vitamin C, vitamin B1, 2, right? There are many types of the B. So vitamin B and C you can say. Right, everybody? Okay. So these are water soluble, B, C, and all, and these are the ADEK. So it is all about the constituents of your food. Now, if I talk about the calorific value, so carbohydrate, protein, fats, so they of course they serve as the major source of the energy, right? That's why people eat chapatis, rice, and all. So, as far as calorific value is concerned, so what do you think, guys? Which have the more calorific value? Carbohydrate, proteins, or fat? What? Which have the more calorific value? Any guesses? So, of course, we have the like calorific value. So for the fats is quite higher. So fats have around like for the 1 gram, it is going to give you 9.45 kilocalorie. But carbohydrate only 4.5 4.1 something, and if I talk about the protein, so it is 5.65 kilocalorie gram. So of course calorific value means what, like when the food is already absorbed, so you are you're doing the like you are taking the oxygen, right?
So there is a oxidation and it will be converted into ATP, right? So the amount of energy released during the complete combustion of the 1 gram of food substance, whether it is of carbohydrate, fat or protein, so this is called the calorific value, right? So after the digestion, then there is a respiration in which you are taking oxygen and it will reach to your body parts. So calorific value means the amount of heat energy release during the complete combustion of 1 gram of any food substances, whether it is of carbohydrate, protein or fat, then this is called the calorific value, right? So if I talk about the carbohydrate, so what I just told, so carbohydrate will give you 4.1 kilocalorie per gram. If I talk about the protein, so it would be 5.65 kilocalorie per gram, right? And last, if I talk about the fat, so it would be around 9.45 kilocalorie per gram. So remember these calorific values, right? And of course, in our body, energy is released in the form of ATP, right? Everybody know that. So ATP means adenosine triphosphate. So there are three phosphate group in the adenosine, right? ATP is the energy currency in our body. So one glucose molecule give you 38 molecules of ATP, right? Yes, guys. So now we have the human digestive system now. Okay. So if I talk about the human digestive system, so guys, we already know that human digestive system is divided into two parts, right? So first part, we can say it alimentary canal. So major portion of the human digestive system is divided into mainly alimentary canal, and then all the associated portion which is called digestive glands. So the main part is alimentary canal, and the things, the glands which are associated with the alimentary canal, so we are calling it as digestive glands. So we have divided the human digestive system into two part, alimentary canal and the digestive system. So let's start with our main portion, alimentary canal. So guys, alimentary canal, can we say that it is a tube-like structure where the main process of digestion of food taking place, and of course absorption also. So where the process of digestion of food and the absorption is taking place, right? It is the main alimentary canal. So what are the main portion? I guess you have seen the major part. Like first is the mouth, right? And then pharynx, which is the common tube for respiration. Okay. And then esophagus, which is the food pipe, esophagus. And then we have the stomach, J-shaped organ. And then we have the small intestine. Why it is small? Because of the diameter, not the length. And then we have the large intestine. Of course, we can also say after the large intestine, we have the like rectum, but rectum is the part of the large intestine only. But yes, you can say anus. Okay. So from the mouth, it is going to the anus also. So, and you can say anus, right? So this is the main alimentary canal. But now if I, okay, let's start with the same, okay, and then we will study about the digestive glands. So guys, if I just draw the basic structure of the
Digestive, I'm just making the rough structure. Okay, you don't need to laugh on my diagram because I'm not so good in drawing, but I can try my best. Okay, I know his nose is quite good. Okay, so this is known as what? Mouth. Mouth is known as the buccal cavity, right? After the buccal cavity, you know that there is a pharynx portion. Pharynx is a common tube for the digestive and respiratory part, right? And then it is going towards the esophagus. After the esophagus, it is going to the J-shape organ, which is called stomach, right? Then we have the small intestine. Am I right? Yes or no, people? Right? After the small intestine, we have what? So after the small intestine, it is going up, right? So large intestine is going to start from here, and then it is going something like that, like cecum, colon, rectum, right? And then there is not much space, so better to end it here. I know I have made the diacetam quite like it is not matching with the body size, but please cooperate with this structure. Okay. Okay. So guys, what is that? So these are the um okay, I'm using the different color for the labeling part. Yes, this can I say this is known as the buccal cavity, and inside the buccal cavity, you know, we have the four type of the teeth, right? And like incisor, canines, premolars, and the molars. And we have the three salivary glands, everybody. You remember? Parotid is the largest one. So sublingual, submandibular, and the parotid. Yes or no? Everybody. So yes, I guess now my voice is completely clear. Now, yes, I was saying buccal cavity, submandibular, okay, sublingual, and the parotid, right? And then we have the esophagus. Esophagus is also known as the food pipe. And then we have the stomach. Stomach is also divided into three part. And then we have the small intestine divided into three part, duodenum, jejunum, ileum. And then we have the large intestine. Large intestine is also divided into three part, right? Cecum, colon, rectum. So remember, I'm writing here. So this is what? This is completely cecum from here. Ascending, horizontal, and then descending. Okay, so cecum is the larger part. Cecum, and then colon. Colon, this one is colon. And then this is rectum. And the last is anus. Cecum, colon, and the rectum. Okay, and for the small intestine, if I say, so for the small intestine, the first part is duodenum, and then jejunum, and then ileum, right, everybody? So please say it: duodenum, jejunum, and the ileum, right? Okay, so these are the main part. Of course, we have the liver also, but that comes under gland part. So if I draw the gland part also, so this is liver, okay, and this is the pancreas here, okay. So liver and the pancreas you can see by the pink color. I know my liver is quite small. I should make it larger. Okay. So guys, I guess the basic diagram it is clear to you.
Okay, so this is what? This is the basic diagram you should know. Okay, and we have the three pairs of salivary glands, right? So sublingual, submandibular, and the parotid. I'm not writing it because there is no space, but I guess you have listened that. Okay, so and last part is what? This is the anus. Anus, better to say. Yes. So this is the basic diagram of our human digestive system. Okay. So now guys, let's start with our main portion, which is the mouth. So if I start with the mouth, so it is the beginning of the alimentary canal, right? And can we say, as I just told, we have three pairs of the salivary gland. So they release the saliva, and it is the site where the saliva mix with the food, right? And it initiate the process of digestion. Whenever we just engulf the food, so digestion start from that side only. So mouth is the first part where digestion starts, right? So the mouth lead to the buccal cavity, that lips, okay, it is leading to buccal cavity, or you can say oral cavity. So inside the buccal cavity, what we have? Inside the buccal cavity, what we have? Can we say inside the buccal cavity we have the teeth, we have the tongue, and of course the salivary glands. So we have the teeth and we have the tongue, right? So we have basically four types of the teeth. I guess you have already studied these things in the 10th class or the primary classes, like incisor, canines, premolars, and the molars. Premolars and the molars, right, everybody? And tongue is the only one. So let's start with our teeth part. So can we say teeth are basically hard bony structure, and they are found in the buccal cavity, right? So it help in the crushing of the food. So they have a like bone, kind of bone structure. So teeth are the very hard and bony structure. And how many times we get the teeth in our lifetime? Of course, two, right? And this phenomenon is also called diphyodont. First is primary, I mean, first is the temporary, and second is the permanent. So if I talk about the teeth, so teeth has basically three regions, okay? And these three regions are crown, neck, and the root region. So the upper part which you see, white part, this is known as the crown, okay? Just downside the red portion which you see, this is called the neck, okay, the lining. And the last part which you can't see by your eyes, it is embedded in the enamel part, I mean it is embedded in the that red portion, okay. So jaw, you can say, so it is known as the root, okay. So we have basically three part of our teeth: crown, which is in basically the teeth, this is the lining which is called the neck, and inside it is something like that. This is called the root system. Okay. So if you talk about the anatomy of the tooth, so it is showing you the enamel, which is the hardest part. Okay, the cement, and there is a pulp cavity. Okay, so these are the like inner part. Enamel is the hardest part. Okay, so there is a cementing material. There is a cavity. Okay, so these are the like some name which is found inside the teeth. After that, as I just discussed, there are four types of the teeth: incisor, canines, premolars, and the molars. So the first, you have to divide into the four part. Suppose this is your mouth. So if I start the from here, 1/4 you, portion you have to see. So can I say you have the two incisor, which is help in the cutting, like cutting bananas, cutting apple, chapatis, cutting. And then you have the sharp teeth. This is known as the canine. And from the canine, there is a double teeth, beginning of double teeth, right? So this is premolars.
and then double teeth of molars, right? So can we say incisor, canine, premolars, and molars, isn't it? So these are two, one, two. But I am adult. So that's why I also have the wisdom teeth, which is the molar. Okay. So, but maybe you people have 2122 because maybe you don't have the wisdom teeth right now. So that's why I'm writing for the adult person. So 2123, same thing happened to the downside. 2123, same thing here. 2123. Okay, same thing here. 2123. So can you count how many total teeth I have? I am adult. That's why I'm asking for the adult person. And you also have to write for the adult person, not for babies or children. Yes. How many total teeth? Can I say 32? 8, 8, 8, 8, 8, 4 ja 32. Okay. But in the there is a dental formula. So dental formula is written only one side like this. So dental formula is for only one side. So you will write it as 2123 divide by 2123. And then there is a mirror copy is this side. Right? Okay. So is that clear, everybody? So if I ask you what is the main function of the incisor, so it help in the cutting. If I talk about the canine, which is the sharp teeth, have you ever seen the tiger? Which tiger has a like very sharp canine? Yes, tearing. Premolars and molars are help in the crushing, grinding, chewing, all these things, right? Crushing, grinding, chewing. Without crushing, grinding, chewing, you can't engulf the food. It would be very difficult for you. Okay, so double teeth are called crushing, grinding, and the chewing. Is that clear? So we have just talked about the teeth. Now let's talk about the tongue. So if I talk about the tongue, so we have the like highly muscular organ, which is the tongue. Okay, and tongues have a taste buds, which are called the papillae, right? So they bear some projection. Have you ever seen the tongue in the mirror? So you will see a very small these projections on the tongue. So these projections on the tongue, these are called the papillae, and these papillae are called the taste buds. So they are responsible for the taste. Okay. So here the front portion, it is responsible for the sweet taste. After that, we have the salt. Then we have the sour taste, खट्टा you can say. And the last part, सबसे बुरी चीज, मान लो कोई चीज अगर कड़वी होगी तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप उसे लास्ट में इंगल्फ नहीं करोगे. तो बिटर चीज, so for the bitter you always have to taste it here only, right? So जब वो यहाँ पर आता है तो फिर तो मैं इंगल्फ ही करना पड़ता है. Would be difficult. Okay. So it means sweet, salt, sour, and bitter taste. Right, everybody? So it is, and there is a portion like our tongue is attached with a portion, okay, which is the muscle. So it is known as the frenulum. So remember, our tongue is attached to the floor of the buccal cavity. ये जो floor है ना end side पे, so it is attached to the floor of the buccal cavity. And this is known as the, I mean, floor of the buccal cavity by what? So this is known as the by frenulum. तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेनलम. तो ये फ्रेनलम से अटैच होता है. So tongue is attached to the floor of the buccal cavity, and this is called frenulum, right? So it is all about your mouth.
So we have, of course, you know that teeth are responsible for the mechanical process. Salivary gland release saliva, and the tongue help in the mixing of the food, right? So it is all about your mouth portion. Yes, so we have discussed about the mouth, and now we are going to discuss about the pharynx. So pharynx means, as I showed you with the diagram. Yes, can you see this portion? This is the common tube, because after that it is divided into two part. First part is the trachea, another part is the food tube. So we want to allow our food to go into the trachea, because there is no use, and it may also cause choking. ठीक है, कहते हैं ना खांसी का फंदा लग गया, तो इसीलिए हमारे जो फेरिंग्स है ये कॉमन ट्यूब है for both the tubes. So we can say it is a common passage or common pathway, passageway we you can say. So it's a kind of common passageway for both food and air. Okay, so air is basically for the trachea, because respiratory portion is there, and food is basically for the esophagus, for the digestive system, right? Okay, so the entry of food into the glottis, it can be prevented by the epiglottis, right? So epiglottis is a kind of flap, and this is the trachea. The first portion is known as the glottis. So we want our food to go into the this portion, trachea. So that's why the entry of the food into the glottis portion, so it can be prevented by a flap which is called the epiglottis. So epiglottis basically covers whenever we are eating something. That's why we shouldn't speak anything while eating. So the entry of food into the glottis, glottis means it's the opening of trachea. So it can be prevented, or it is prevented by the epiglottis. And what is epiglottis? So it is a kind of cartilaginous flap. A cartilaginous flap. Okay. Okay. So this is all about the fairing, and after that, after the fairing, so of course we are mostly concerned with our food pipe, not with the air pipe. So let's start with our esophagus now, which is the food pipe. So if the food is not going into the glottis part, so of course it is going to esophagus part, which is the food pipe. So it is a thin long tube, right? It is around like 25 centimeter. So thin long tube, okay, and it is going towards the stomach. So can I say like it is regularly moving, like continuous contraction and the relaxation? I guess you have studied in the 10th class also, right? Which is the what? So which is the peristaltic movement. So the it is a like rhythmic movement, you can say. So it is rhythmic movement of contraction and the relaxation, so that food can easily go into the stomach. So it is the rhythmic contraction or rhythmic movement of contraction and the relaxation. Yes, exactly. Contraction and relaxation. And this is called the peristaltic movement.
right? So this is, so why peristaltic is important? Because it is allowing the food to easily go into the stomach with the help of the continuous contraction and the relaxation, right? So remember, okay. So here there is a sphincter muscle at the end of the esophagus, which is called the gastroesophageal sphincter, so which help in the regulation of which help in regulate, yeah, you can say, which regulates the opening of esophagus into the stomach, right? So it regulate the food, right, like how much food should go into the stomach. So gastroesophageal sphincter, so it regulates the opening of esophagus into stomach. So this is gastroesophageal sphincter. Fine. Okay. So now we are coming to the main portion now, okay, which is the stomach part. So stomach part is also divided into the three main part. Oh, something bad. Okay. So we can say this region is known as the fundus. This region of the stomach is called fundus, and the tube it is coming here. So this is known as the cardiac region. Cardiac. This is known as the pyloric region. It is something like this, like this. Okay. So this region is known as the pyloric. So we have total three type of region, and now it is going to the duodenum, right? Remember now the first part of this intestine. So now it is going towards the um, so fundus, cardiac, and the pyloric. So it is what? So it is a J-shaped organ. If I talk about this stomach, so it is J-shaped organ. So it is located lower part of the abdominal cavity or the upper part of the abdominal cavity. Abdominal means like the just after the lungs, just downside the lungs, right? तो of course जो जिसको हम मेन यूजुअली हिंदी में बोलते हैं पेट, राइट, तो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है ना stomach. So it is just located on the left of the upper left part of the abdominal cavity, right? And it has basically these regions: cardiac region, fundus region, pyloric region, right? So you have to remember that. So if I talk about the cardiac region, तो बेसिकली ये ओपन कहाँ से हो रहा है? स्टमक के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ईसोफेगस से आ रही है, तो ईसोफेगस कहाँ पे एंटर हो रहा है, कार्डियक में या फंडस में? लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं यहाँ पे, तो रिमेंबर इट इज अ कार्डियक रीजन, ओके? सो कार्डियक रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो वी कैन से वेयर द ईसोफेगस opens and guarded by, तो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था, तो ये यहाँ पे कौन सी वो है स्फिंक्टर?
So I told you gastro esophageal sphincter. ठीक है, GES का मतलब है gastroesophageal sphincter which I have already explained here. This one, right? Gastroesophageal sphincter जो कि रेगुलेट करता है फूड को कहीं पे ले जाने के लिए. Right, everybody? Fundus means what? It is the temporary storing area. If I talk about the fundic region, so it is just the storage area, of course, the temporary. So it's a temporary storage area. तो यहाँ पे फूड सिर्फ स्टोर रहता है, ठीक है. ऑफ कोर्स स्टोर जब तक कि डाइजेशन नहीं हो जाए. तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हार्मोन निकलते हैं, हम फंक्शनिंग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी. और बेसिकली ये वाला पार्ट तो पूरा बॉडी का ही होता है, स्टमक के अंदर बॉडी भी होती है. तो दिस रीजन इज कंप्लीटली बॉडी ऑफ द स्टमक, राइट. तो ये मेन पार्ट है. इतना सारा जो मेन पार्ट आप देख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज, दिस इज द मेन बॉडी. ओके. और छोटे छोटे पार्ट हैं तीन. और अब आते हैं पाइलोरिक पे. सो पाइलोरिक अब कहाँ पे एंटर हो रहा है? पाइलोरिक इज गोइंग टू विच पार्ट? नाउ इट इज एंटरिंग इनटू द ड्यूडेनम, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट क्या है? सो विच ओपन्स into the duodenum. एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्फिंक्चर होती है जो कि इसी के नाम पे रख दी गई है. तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर है जिसका नाम क्या है मेरे पास? पाइलोरिक स्फिंक्चर. ये भी क्या करती है? फूड के अमाउंट को रेगुलेट करती है. हाउ मच अमाउंट शुड गो और हाउ मच अमाउंट शुड रिटेन हियर. तो स्फिंक्चर मसल, तो पाइलोरिक स्फिंक्चर इट इज इन दिस रीजन. आर यू गेटिंग एवरीबडी? सो यहाँ पे जो स्फिंक्चर थी इसका नाम था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्चर. And now here, so this is known as the pyloric sphincter because this is the pyloric region. This is the main body. This is the fundus region. This and this is the cardiac. Okay, it is entering into this region, right? So this is quite easy for the stomach. So of course, the functioning we will functioning of the stomach we will discuss. So now we are coming to the small intestine. So it is all about the stomach. Now we are moving to the small intestine. तो small intestine basically three main part है हमारे पास. So let's start with the same small intestine. So as I told, small intestine is divided into three main part: duodenum, jejunum, and the ileum. So small intestine के three main part हैं. First, U-shaped. So U-shaped duodenum it is. Long coiled jejunum, and last highly coiled ileum, right? So we have the three main portion where the main digestion is taking place for the protein, carbohydrate, and fats. Okay, so we will discuss the functioning later because right now we are only studying the structure here. And same thing if I talk about the large intestine. So large intestine also have the three main part, right? So as I told, cecum, colon, and the rectum, right? तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी अपने आप में तीन पार्ट होते हैं बेसिकली. सो वी कैन से इट इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट इज द सीकम, पहला वाला पार्ट. सेकंड इज द कोलोन,
and the last is the rectum, right? So if I talk about cecum, so it is a small and the blind sac, small and blind sac structure. सो इसी सीकम के पास क्या लगा हुआ है, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी है, जो कि हमें पहले जैसे हम घास वास खाते थे, इवोल्यूशन राइट। तो अब ये एक तरह से नॉन फंक्शनल, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम दिस रीजन ऑल्सो। अगर किसी के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पेन होता है तो उसे काट दिया जाता है, क्योंकि देयर इज नो यूज राइट नाउ। ठीक है, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करती थी, सेलुलोज एंजाइम, बट नाउ देयर इज नो यूज। यस, सो कोलोन इज दी सीकम। तो जो था मेरे पास, वन सेकेंड आई जस्ट सी गाइस, मैंने लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम कोलोन, सो दिस इज द सीकम पार्ट, दिस वन सीकम, दिस इज द कोलोन पार्ट, कोलोन, ascending colon, horizontal colon, and the descending colon, descending, and this is the rectum, and this is the anus, right? So this is what, so this is cecum. Colon is divided into three parts: ascending, horizontal, descending. Last is the rectum, and then anus, right? So yes, colon is the larger part, जो कि काफी बड़ा है। और रेक्टम क्या हो रहा है, रेक्टम इज एंटरिंग इनटू द एनस, राइट? सो इट इज ओपनिंग इनटू, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस भी होते हैं which help in the degradation of the food, opening to anus, okay? और ऑफ कोर्स एनस में भी क्या होता है कि स्फिंक्टर मसल होता है, जो कि रेगुलेट करता है अमाउंट को टू रिलीज द वेस्ट आउटसाइड। सो anus also have a sphincter muscle, right? So the opening of the anus is controlled by the sphincter muscle. So this is what, so this is all about your basic structure. Now I am going to tell you about the histology of the alimentary canal. Histology means we can see the wall. ओके, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सब की एक लेयर है। तो अगर मैं इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं, तो हमें ना कुछ लेयर्स दिखती हैं। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो वो लेयर्स कैसी कैसी होती हैं, सो सपोज एक लेयर मेरे पास ये है, देन एक लेयर मेरे पास ये है ऐसी कुछ, मान लो एक लेयर मेरे पास कुछ ऐसी कुछ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लेयर है, तो ये जो मेरे पास ऐसी बाहर बाहर की जो लेयर दिख रही है, ठीक है, तो इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिरोसा। मतलब ये एक ट्रांसफर सेक्शन है इंटरनल ऑर्गन का। तो अगर आप इसे कट करते हो, तो जो बाहर बाहर की जो ये लेयर मिलती है हमें, दिस इज कॉल्ड दी सिरोसा। ठीक है, फिर हमें ये क्या मिलती है, मस्कुलरिस, और यू कैन ऑल्सो से मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर एक्चुअली दो टाइप की होती है, जो इनर वाली होती है वो सर्कुलर होती है, और जो आउटर वाली होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, लंबी लंबी। ठीक है, और एक होती है मेरे पास सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर इस मस्कुलरिस के अंदर पाया जाता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर मेरे पास सब मिकोसा होता है, सब म्यूकोसा। और फिर लास्ट में मेरे पास आता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट जैसा है, क्योंकि इसमें फूड होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मिकोसा, मिकोसा। और ये एक तरह से होल है, राइट? ये एक तरह से कैविटी है, बाहर की कैविटी। आई मीन ये जहाँ पे फूड जाता है, ये एक हॉलो पोर्शन है ना, ये जहाँ पे खाना वाना डाइजेस्ट होगा, ये एक ऐसा खाली खाली पोर्शन है, हॉलो स्ट्रक्चर है, राइट? ये तो ये पूरी पूरी लेयर है।
तो ये हॉलो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सो हॉलो स्ट्रक्चर इज नोन एज द ल्यूमेन। हॉलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ल्यूमेन। और ये मेरे पास तीन लेयर है। तो सिरोसा, मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के अंदर दो पोर्शन होते हैं। इनर वाला जो होता है वो होता है सर्कुलर, राइट, और एक होता है बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल। सो द आउटर वन इज लॉन्गिट्यूडनल and the inner one is circular, right? So this is called the muscularis, submucosa, and the last is the mucosa. ठीक है? So these are the layers forming the alimentary canal. So this is the complete histology. Okay, if I ask you यहाँ पे सबसे हार्ड लेयर कौन सी होने के चांस है और सबसे सॉफ्ट लेयर होने के किसके चांस है? So of course we will say serosa would be toughest one. I mean not toughest one, but yes we can say as compared to others. तो serosa थोड़ी हार्ड हो सकती है, ठीक है। और जो अंदर की साइड होगा, क्योंकि फूड तो स्पॉन्जी होता है, अगर स्पॉन्जी फूड को डाइजेस्ट करेंगे तो हमारी लेयर ऐसे कट सकती है और कुछ स्टेबल नहीं होगी, तो इसीलिए वी कैन से मिकोसा वुड बी सॉफ्टर। थोड़ा सा इसमें म्यूकस होता है, राइट, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा, उसको दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, चुई करने के लिए अंदर ही अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी। एक ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ये इंटेस्टाइन तो इसको कट करके देखते हैं यहाँ से, तो हमें कैसा दिखता है? ये लेयर दिखती है हमें, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सबमिकोसा, मिकोसा एंड अंदर ल्यूमेन। तो ये लेयर्स है हमारी, विच वी नीड टू रिमेम्बर दैट। आफ्टर दैट अब हमारे पास बचता है सलाइवरी ग्लैंड का पोर्शन। तो अब जो पोर्शन बचता है वो है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है हमारे पास, ऑफ कोर्स वो चीजें रिलीज करती हैं अलग अलग। तो सबसे पहली तो मेरे पास आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे मैंने अभी समझाया भी था, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटेड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में होती हैं हमारे, ठीक है, अलग अलग एंजाइम और जूस रिलीज करते हैं। लिवर, ये भी एक जूस रिलीज करते हैं, बाइल जूस, पढ़ेंगे अभी हम। पेनक्रियाज, ये भी एंजाइम और जूस रिलीज करते हैं। और फिर लास्ट इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन भी अपने आप में जूस रिलीज करता है, जिसका नाम है सक्कस एंट्रिकस। तो दिस इज इंटेस्टिनल ग्लैंड वी कैन से, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मैंने दो, आई मीन बेसिकली तीन चीजें लिखवाई थी, राइट। तो ये बक्कल कैविटी में होती है। तो हमारे पास पैरोटिड जो कि काफी बड़ी होती है। सब मैंडिबुलर को ही हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, सब मैंडिबुलर बोलो या मैक्सिलरी बोलो एक ही बात है। और एक है मेरे पास सबलिंगुअल। सबलिंगुअल थोड़ी आगे की साइड होती है, राइट, पीछे की साइड सब मैंडिबुलर, और फिर पैरोटिड, राइट। तो ये अपने आप में ग्लैंड है जो कि सलाइवा निकालती हैं। अभी हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे। तो ये माउथ की साइड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा कहाँ होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी स्टमक के अंदर, राइट। तो स्टमक के अंदर हमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखती हैं जो कि HCl और मतलब कुछ एंजाइम निकालती हैं। वी विल डिस्कस दीज आर प्रेजेंट इन द स्टमक। फंक्शनिंग अभी हम पढ़ेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर। लीवर की बात की जाती है, तो लीवर हमारे पास राइट साइड में होता है, राइट, एब्डोमेन कैविटी के डायफ्राम से जस्ट थोड़ा सा नीचे। और ये लीवर जो होता है ये एक्चुअली में अपने आप में कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलो। तो एडल्ट ह्यूमन का इतने केजी का होता है। तो ये जो लीवर होता है ये क्या, इसके अंदर हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो लीवर के सेल्स होते हैं उसे हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये अपने आप में क्या है? हेपेटिक लॉब्यूल्स को कंटेन करता है। तो हेपेटिक सेल इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो लॉब्यूल्स होते हैं ना, तो ये लॉब्यूल्स कवर होते हैं एक कैप्सूल से, एक शीथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो ये लीवर जो है वो हेपेटिक, ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं। सो हेपेटिक लॉब्यूल्स, and these hepatic lobules are covered by the
It has already asked in the NEET examination. Gleason's capsule, right? So what is Gleason's capsule? So it is a sheath of connective tissue. So it is a sheath of कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि इन हेपेटिक लॉब्यूल्स को कवर करती है. सो इट इज कवर्ड बाय द Gleason's capsule. And what are Gleason's capsule? A sheath of connective tissue. Remember that. And one more thing, जैसे हम मैमल्स हैं तो हमारे लिवर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो थोड़े फैगोसाइटिक होते हैं. फैगोसाइटिस में किसी भी चीज को इंगल्फ करना. जैसे हमारे पास बहुत सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं, राइट? जो कि जम्स को फैगोसाइट कर लेते हैं, खा लेते हैं, लाइक अ पैकमैन. सो अब इसी के ऊपर ना कुछ जो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं इसी को हम कफर सेल्स भी बोलते हैं. सो रिमेंबर, सो द लिवर ऑफ मैमल, तो ये जो मैमल्स का लिवर होता है लाइक अस, सो दे आल्सो कंटेन फैगोसाइटिक सेल जो कि जम्स को भी मारता है. फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी पढ़ा है ना, फैगोसाइटिक सेल्स, these are called Kupffer cells. Yes, पढ़ा होगा ना एनल मैप, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनिस, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल्स, राइट? तो यस, तो मोनोसाइट भी ये करते हैं. तो कफर सेल्स. अब ये जो बाइल जूस होता है ये हिपेटिक सेल्स में बनता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में. लिवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर होता है ना, राइट? तो गॉल ब्लैडर इज जस्ट ओनली स्टोरिंग द बाइल जूस. तो ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है ओनली. और तो बनाता कौन है? बनाते हैं हमारे पास हिपैटिक सेल्स. तो ये छोटे छोटे सेल्स हैं बहुत, तो ये बनाते हैं और ये स्टोर करता है बाइल जूस को, राइट? सो रिमेंबर दैट. इसी के बाद हमारे पास आता है पेनक्रियाटिक जूस. तो ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये बेसिकली यू शेप टाइप का ऑर्गन है जो कि दोनों तरीके से एक्ट करता है. मतलब ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी हेल्प करता है पेनक्रियास, जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी निकालता है एंडोक्राइन में. और इस एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट होती है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस भी निकालता है, जिसमें पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम भी हो सकते हैं. तो जो मेन डक्ट आती है पेनक्रियास से, ठीक है, आपने पेनक्रियास का स्ट्रक्चर देखा था, अभी बताया था मैंने. तो पेनक्रियास जो होती है, तो पेनक्रियास की जो डक्ट होती है, इसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विरसंग. इट इज द नेम, duct of Wirsung. So we have to remember that. तो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाटिक से जो डक्ट आ रही है आगे जाके कॉमन भी होती हैं, तो हम ये चीजें भी ऑफ कोर्स देखेंगे. तो यही हमारे पास है ग्लैंड वाला पोर्शन जो कि हमें याद रखना है, ठीक है? सो पेनक्रियास इज व्हाट? तो पेनक्रियास इज लोकेटेड एट द कॉर्नर साइड एंड इट इज अ यू शेप, ड्यूडेनम के पास मिलता है हमें, राइट? सो इट इज प्रेजेंट नियर द यू शेप ड्यूडेनम. ड्यूडेनम वैसे भी यू शेप डी होता है, राइट? एंड कैन आई से पेनक्रियास इज अ मेक्सोक्राइन ग्लैंड? व्हाई इट इज अ मेक्सोक्राइन ग्लैंड? मेक्सो, बिकॉज इट इज वर्किंग एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ. एंडोक्राइन का मतलब विदाउट डक्ट और एक्सोक्राइन का मतलब विद द डक्ट, राइट? और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्सोक्राइन से रिलेटेड है, राइट? इनके इन सबके पास डक्ट होती है. तो इसके पास भी लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो दीज लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट. सो दैट रिलीज द पेनक्रियाटिक जूस. और पेनक्रियाटिक जूस थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, क्यों? क्योंकि जो स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है. तो स्टमक से एसिडिक आ रहा है तो ये जानबूझ के इनको एल्कलाइन निकालना पड़ेगा ताकि वो फूड को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सके, वरना एसिडिक फूड तो नुकसान कर देगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को. क्योंकि स्टमक में तो म्यूकस की लेयर थी तो प्रोटेक्ट हो गया था, आगे प्रोटेक्शन के चांस थोड़े कम है, तो इसलिए ये एल्कलाइन निकालते हैं, बेसिक निकालते हैं, राइट? तो हमारे पास लिवर से जो डक्ट आती है और पेनक्रियास से जो डक्ट आती है,
तो ये दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, फिर फाइनली आके मिल जाती हैं, राइट। और ये मिलने के बाद क्या बनाती हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, रिमेंबर दैट। सो इसी को हम बोलते हैं एक तरह से बिलियरी सिस्टम। तो बिलियरी सिस्टम क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड दी बाइल डक्ट। तो ये पूरा बिलियरी सिस्टम है। तो बाइल जूस सिक्रीट होता है लिवर से, बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, एंड दिस बाइल जूस इज कमिंग फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट डक्ट्स। तो ये मेरे पास स्फिंक्चर ऑफ ऑडी है, जो कि गार्ड करता है किस चीज को, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट को ड्यूडेनम के अंदर। तो ये हमारे पास, तो एल्कलाइन के लिए हमारे पास ऑफ कोर्स जैसे एसिडिक में फूड आ रहा है तो बहुत सारे टाइप की चीजें हैं, ट्रिप्सिन भी है और इंटेस्टाइन खुद भी है। ओके, तो बस हमें ध्यान रखना है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया के को बोलते हैं ग्लॉटिस, जो फ्लैप होता है जो रोकता है वो एपिग्लॉटिस, जो ईसोफेगस की एंट्री को स्टमक में करवाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो स्टमक से ड्यूडेनम में लाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। और जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, मतलब पेनक्रियाज और पेनक्रियाज और लिवर से ये डक्ट आती है, मिल जाती हैं, तो वो ड्यूडेनम में कैसे एंटर करती हैं, उसे बोलते हैं स्फिंक्चर ऑफ ऑडी। स्फिंक्चर ऑफ ऑडी जो कि हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग के अंदर भी, स्फिंक्चर ऑफ ऑडी ये लिवर से आ रही है, ये पेनक्रियाज से, दोनों मिलके ये बनते हैं स्फिंक्चर ऑफ ऑडी, ठीक है। और फिर जैसे इलियम होता है, ड्यूडेनम मतलब आई मीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक और होता है एक गार्ड, जिसे हम इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट इलियम और पहला पार्ट लार्ज का सीकम, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया इलियोसिकल वेल्व। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर पढ़ लिया है डाइजेस्ट सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा फंक्शनिंग पढ़ेंगे, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।